ये है दुबई पुलिस की गाड़ी। बहुत सा दिक्कत। गाइज मैं आज इस कार की स्पीड को ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करने वाला हूँ। नॉर्मली ऐसे टॉय कार्स में कुछ इस तरह का डीसी मोटर यूज होता है जिससे कि ये कार कुछ इस तरह से चलता है। फ्रेंड्स मैं इस कार के अंदर का ये डीसी मोटर को इस ड्रोन वाले मोटर से रिप्लेस करने वाला हूँ और देखेंगे कि इस कार का स्पीड कितना इंक्रीज होता है। गाइज स्क्रू ड्राइवर की मदद से इस कार को फटाफट से अनस्क्रू कर लेंगे। सो फाइनली कार ओपन हो चुका है। सो फ्रेंड्स स्पीड बढ़ाने के लिए इस मोटर को हम ड्रोन मोटर से रिप्लेस कर देंगे। सो इस मोटर को जल्दी से अनस्क्रू कर लेते हैं। तो गाइज इस मोटर को टाटा बाय बाय कह के ड्रोन मोटर को इंस्टॉल कर लेना है और काम खत्म। आई थिंक ड्रोन मोटर स्लिम होने की वजह से यहाँ पर सेट नहीं हो पाएगा गाइज। सो यहाँ पर मैंने एक जुगाड़ करने का सोचा है। सो गाइज यहाँ पर मैंने ये नॉर्मल डीसी मोटर के अंदर का कोयल बाहर खींच लिया है और इसी के अंदर मैं ड्रोन मोटर इंस्टॉल करने वाला हूँ। परफेक्ट फिटिंग गाइज। सो चलिए इसको फटाफट से इंस्टॉल करते हैं और इसको फटाफट से चला के देखेंगे। सो इसको एक बार स्विच ऑन करके देख लेते हैं। ये काफी स्पीड से घूम रहा है गाइस। आई थिंक मेरा जुगाड़ काम कर गया है। Oh my God! ओके फ्रेंड्स इसको जल्दी से स्क्रू फिट कर लेते हैं और उसके बाद इसका फाइनल टेस्टिंग करेंगे। सो गाइस फाइनली मैंने इस कार के अंदर एक ड्रोन मोटर को इंस्टॉल कर लिया है। चलिए अब इसको चला कर देखते हैं। एज यू कैन सी यहाँ पर कुछ ज़्यादा स्पीड ऑप्टिमाइज हो गया है गाइस। स्पीड यहाँ पर इतना बढ़ चुका है कि गाइस इसको संभाल पाना मुश्किल हो रहा है।
Hope you all guys like the video. Do subscribe and keep motivating.